बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छोटानी। आप लोगों को इस ऑनलाइन सेशन में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एम्प्लॉय इंगेजमेंट के हवाले से, और क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था और ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। और आज के दौर में एचआर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू कीप योर वर्क फोर्स इंगेज्ड एट वर्क प्लेस। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपकी जो बेशतर वर्क प्लेस की जो वर्क फोर्स है, इट इज़ फॉलिंग इन मिलेनियल्स का जो ब्रैकेट है उसके अंदर फॉल करती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे थिंक, हाउ दे बिहेव, व्हाट देयर परसेप्शंस आर, व्हाट देयर प्रेफरेंसेस आर, एंड व्हाट रियली मोटिवेट्स देम एज ह्यूमन। सो उनके इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके बिहेवियर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके ट्रेड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो एक रिसर्च मैं पढ़ रहा था एंड आई गॉट टू नो दैट by 2025 75% of the workforce will be millennials and Gen Z, and rest of it is going to be generation X. अब मसला ये आता है कि बहुत सारे इदारे आज भी in terms of policies, in terms of culture, Gen X को या इवन उससे जो पुरानी जो जनरेशन है, बेबी बूमर्स वाली जो जनरेशन है, उनकी तरह की पॉलिसीज या जो पॉलिसीज उनको पसंद थी या जिस तरह के कल्चर्स उनको पसंद थे, उस तरह के कल्चर्स को आज भी बगैर किसी चेंजेस के वो फॉलो कर रहे हैं। और उसकी वजह से आपका जो मिलेनियल वाला जो ब्रैकेट है वो किसी हद तक उसको निगलेक्ट वो फील करता है, वो ओवरलुक्ड फील करता है, और उसकी वजह से वो वर्क प्लेस में ज़्यादा इंगेज्ड फील नहीं करता और मोटिवेटेड फील नहीं करता। सो हमने थोड़ा बहुत इस पर काम किया एंड वी डिड सम रिसर्च एंड वी गॉट टू नो दैट देयर इज अ साइकोलॉजिकल connection that really works when it comes to employee engagement. And I'm going to tell you just one tool which is going to solve this problem. And that is that you have to start treating people of your organization as adults. अब ये सुनने में तो एक जुमला है, लेकिन दिस इज गोइंग टू स्पीक अबाउट योर कल्चर। अगर आप माइक्रो मैनेज करते हैं, अगर आप लोगों को एम्पावर नहीं करते, अगर आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं कराते, अगर आप लोगों की करियर डेवलपमेंट नहीं करते, अगर आप लोगों की मेंटल वेलबींग को केयर नहीं करते, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं सोचते, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सोचते, इट मीन्स दैट यू आर नॉट having the right culture for millennials, because these are the things which they care. कि उनको empowerment भी चाहिए, उनको recognition भी चाहिए, उनको career development भी चाहिए, उनको जो है work life balance भी चाहिए. So you need to think in all of these horizons to give them that kind of impression of a culture so that they can feel engaged and motivated at work, and they take the ownership of the work that they're doing, बिकॉज इनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। सो मैं आपको एक छोटा सा टूल, एक नुस्खा बता दूं आज की वीडियो के अंदर, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा इन टू एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ विद हाउ यू कैन क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ एम्पावरमेंट एट वर्क, क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ रिकग्निशन एट वर्क, क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ you treating people as adults at work, and that is creating the culture of trust. When you create the culture of trust, psychology says, when you create the culture of trust, it releases a chemical in the human brain which is called oxytocin. And oxytocin, on the other hand, it is also called as the hormone of love, or love hormone, or hormone of cuddle. ये वही हार्मोन है कि जब एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है, सो दैट शी कैन बी मोर कंसर्न, केयरफुल एंड बी मोर विजिलेंट अबाउट द चाइल्ड which she is actually taking care. And when the birth is formed, when the birth happens, that is the time when oxytocin levels goes up, because she also wants to take care of the child, because the child is vulnerable, the child wants the mother to take care of him or her. तो उस वक्त oxytocin release होता है, and oxytocin make an individual trust
the other person. At the same time, when the mother is nursing the child, oxytocin levels goes up, because that is the time when the kid also wants the trust to be received from the mother. This oxytocin also gets released when two friends are talking to each other, when they are socializing with each other. This oxytocin also gets released when you get the right amount of trust and empowerment from your supervisor, from your team lead, from your manager, from your leader of the department. तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज होना बेइंतहा इंपॉर्टेंट है if you want to create the impression of trust in your organization. Now, I'll tell you a contra side of it, a flip side of it. What is really happen and what normally happens when we're going through the culture of or the transformation age or the the process of change in the organization. It basically creates an environment of uncertainty, because a lot of good and bad things happens when the change is occurring, which creates an impression of uncertainty, which releases cortisol in the mind of human brain, in the human body. And cortisol is the hormone or the neurotransmitter of stress, जो कि आपके fight or flight response को activate करता है. So when your cortisol levels goes up, the oxytocin automatically goes down. तो उस वक्त ट्रस्ट नहीं होता, उस वक्त आपका बॉन्डिंग नहीं होगी, उस वक्त कोलैबोरेशन नहीं होगी, उस वक्त टीम वर्क नहीं होगा, एंड उस वक्त आपकी क्रिएटिविटी विल बी एट द लोवेस्ट, उस वक्त आपका मोरल विल बी एट द लोवेस्ट. एंड जैसे ही आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, जैसे ही रिकग्निशन मिलना शुरू होगा, जैसे ही एक दूसरे को एम्पावरमेंट मिलना शुरू होगी, जैसे ही माइक्रो मैनेजमेंट कम होगी, आप लोगों को उनको डायरेक्शंस देके, आप उनको उनके टास्क देके, उनकी आप एक्सपेक्टेशन सेट करके आप उनको उनके काम पे लगा देंगे, और उसके बाद आप ओकेजनली उनसे सिर्फ फीडबैक लें, आप उनको कोच करें, उनको डायरेक्ट करें, उनको आप सिखाएं, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट डेवलप होगा. और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करें, उनको उनके काम पर आप उनको अप्रिशिएट करें. Just creating the environment of trust will decrease the levels of cortisol amongst the people working in the workplace. आप देखें ज़्यादातर लोग जो है गेट अवे ढूंढ रहे होते हैं एट वर्क. अब वो अपने लॉबीज भी फॉर्म करेंगे, वो पॉलिटिक्स भी करेंगे, वो they'll find out all kinds of options to get that hike of relaxation through smoking, through other ways at workplace. तो उसको mitigate करने के लिए just introduce this kind of culture which introduces trust amongst people will automatically resolve a lot of problems. And this is what the millennials wants today, that आप उनको एक trust worthy connection आप उनको फॉर्म करके दें, उनको एक कल्चर फॉर्म करके दें, और उसमें वो एक पावर फील करेंगे, उसमें वो क्रिएटिव फील करेंगे, उसमें वो लेस स्ट्रेस फील करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी. ऑल बाय जस्ट ट्रस्टिंग ईच अदर, ऑल बाय नॉट माइक्रो मैनेजिंग, ऑल बाय नॉट चेकिंग अप ऑन पीपल दैट व्हाट दे आर डूइंग, स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज अडल्ट्स. सो दिस वाज टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स. इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, as this is how I am going to feel a bit motivated, and I'm going to keep collecting, keep sharing the research and the information that I come across on my daily basis. Inshallah, see you in another video. Take care. Allah Hafiz.